Yes, Vandana, joining the class. Okay, sir. Morning, everybody. Morning, Good sir. morning. Good morning, sir. Morning. Okay, let's begin with. थोड़ा क्लियर नहीं है सर. हाँ जी, कैमरा क्लियर नहीं है सर थोड़ा. कैमरा क्लियर नहीं है. सर Okay, just a sec. There were some. I had some app login issues, so I've come in through the browser. So probably browser में हमेशा ये issue रहता है. I think. How is it now? Can you see the board? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we can see the board. So those who can't see the board, if you can just log out and then log in again. Okay, so we're starting off on this month's module. So this month, what we are going to be doing is this is the November module. And what we'll be doing now will be Simpson's rules. We'll be doing KM, then angle of Loll, and grain calculations, grain stability. These are the 4 topics that we'll be covering in this module, in this month. So I'm starting off with the KMT first. Both of these, rather all the 3, actually we are going to be doing from nutshell. ब्लर आ रहा है. सबके लिए ब्लर है. सर ब्लर दिख रहा है सर. Yes. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा ब्लर है सर. हाँ सर, ब्लर है. Yes, sir, ब्लर है. ओके, जस्ट अ सेक. मेरे को जरा हाई डेफिनेशन में चेंज करने दो जरा. How do you see the board now?
It's clear, sir. Please rotate. सर फॉन्ट टेढ़ा है सर, सीधा करना। क्या हो गया? सर साफ है लेकिन रोटेटेड आ रहे हो। फॉन्ट रोटेट करना पड़ेगा सर। सर लैंडस्केप में वर्क हो रहा है सर। ओरिएंटेशन चेंज कर दो सर, लैंडस्केप में। Is it in landscape? Yes, sir. इट्स इन पोर्ट्रेट सर, लैंडस्केप। सर फॉन्ट रोटेट कर लीजिए, आई थिंक ठीक हो जाएगा। फोन को 90 डिग्री। नो सर, अदर साइड। हाँ सर भी ठीक है। अभी ठीक है सर। सर, ऐसे ठीक है सर। Okay. Are you able to see the complete board? नो सर, कंप्लीट तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये वाला सामने वाला दिख रहा है सर। अभी कंप्लीट बोर्ड नहीं आ रहा है सर। हाँ जी, सर ब्लर है। अभी भी ब्लर है। यस सर। Is it blurred for everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो आई थिंक सर कुछ नेटवर्क इशू है सर। अटक भी रहा है बीच बीच में। Okay. How is it now? How do you see the board now? सर अभी क्लियर है। बेटर है सर, बट Clear. हल्का है, बट इट इज ओके। Okay. All right. So these three topics we'll be doing from Nutshell, Volume 2. These three topics from Nutshell, Volume 2. So I'm starting off with KMT. After KMT, I'll be going on to angle of Loll. And then I'll switch over to the bigger one, which is Simpson's rules. So पहले KMT से शुरू कर रहे हैं. Grain calculations, obviously, we'll be doing it from Hinship. This is from Hinship. Okay. So let's begin with, I'm doing chapter 19 of my book. That is calculation of Km and Km curves. इसमें Km curves भी है. The Km curves is not in our syllabus. So ये हम नहीं करेंगे. But calculation of Km is very much in our syllabus. So we'll concentrate on calculation of Km.
All right. So let's begin. What are the formulas that we'll be using? I've already been using some of them last month, so it'll be a repetition for most of you. So the first one is, if I have a log like this, सर ब्लर ही दिख रहा है. ब्लड दिख रहा है? ये सर बहुत ज्यादा ब्लर दिख रहा है. Yes, sir. Okay. हाँ सर Yes, पढ़ sir. नहीं पा रहे सर. Okay. All right. Just a sec. Let me try once again. ब्राउजर में इश्यूज आ जा गए. मतलब ड्राइंग दिख रही है सर, लिखा हुआ मेकआउट करना पड़ रहा है. Okay, got it. Let me just try once again with my mobile. एक second. Just a sec. Can you say more? हाँ सर, ओरिएंटेशन सर चेंज करना पड़ेगा. सर अभी क्लियर हो गया, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज कर दो. Clear आ रहा है. Orientation change. Okay. How is it now? परफेक्ट. ठीक है सर, अभी एचडी हो गया सर. चलो, great. See how long it lasts. So we're talking about a log which is floating in water, and so this is the water line. So the log is of length L and breadth B, and she is floating in water of draft delta. So therefore, the underwater volume will be L into B into D. Yes. Okay. If this be the keel, then can you tell me what will be the KB? D/2, sir. D/2. Okay. So KB will be D/2. So this is the center of buoyancy. This becomes the KB, और ये D/2 हो गया. The BMT is IT by V, moment of inertia transverse divided by underwater volume, and moment of inertia transverse for a rectangular water plane is given by the formula LB cube by 12. Moment of inertia transverse for a rectangular water plane please mute it. LB cube by 12.
if I put LBD in it, what I get is B square by 20. आई थिंक सर कैमरा थोड़ा पीछे कैमरा सर थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा सर, वो नीचे का बोर्ड दिख नहीं रहा सर। Now, ऐसा नीचे वाले huh? नीचे वाला सर दिख नहीं रहा सर, आफ्टर नीचे का जो B एलबी square क्यूब के है, बाद दिख नहीं रहा। अच्छा ये वाला दिख नहीं रहा। विजिबल Okay. दिख रहा है दिख सर, तो रहा है, दिख रहा है सर। कंप्लीट दिख रहा है, उसके नीचे भी दिख रहा है सर, स्टारबोर्ड साइड का थोड़ा सेक्शन बस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है बट Okay. वहां पे कुछ भी नहीं लिखा ओके हुआ है, ठीक है वो। हाँ अभी ठीक है। ओके 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 So पोर्ट साइड से भी कम कट गया हल्का। okay. LB cube by 12 LBD. And this is equal to B square by 20. ये नजर आ रहा है? यस सर। यस सर Okay. So the third formula is not visible. Third formula is not visible. BM सर अब तो HD है एकदम, अब तो हाँ जी? दिखाई देना चाहिए। दिख रहा है सर, दिख रहा है। HD है सर, अभी तो HD है एकदम। Okay. Okay. Great. तो आई थिंक लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा। क्यों अभी नहीं नजर आ रहा? नहीं, जिसको नहीं आ रहा सर, बस क्लियर है, अब बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीन पे आउट ऑफ साइट है वो। हाँ? अच्छा, स्क्रीन पे राइट क्लिक करो, फिट टू फ्रेम, फिर पूरी स्क्रीन दिखेगी। That's exactly what I was trying to tell you in the beginning only. Just right click, fit to frame, and you'll get everything on your screen. There won't be an issue. And you can even rotate your. Then you don't need to do all this. Yes, sir. BMT is equal to IR by V. IT by V. Okay. थोड़ा सर ये ट्रांसवर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा एक्सप्लेन करने के सर। Yeah. So basically, if this be the top view, this is forward, this is aft, this is port, this is starboard. So I'm trying to talk about this view of the ship. This is the view I'm trying to show. So there'll be two axes. One axis which will go like this. And this is the axis which I'm going to show here. This and this are the same. ये ऐसे जा रहा है. ये side view है, ये top view है. ये side view है, ये वाला view. और इसी का ये top view है. This is the axis. So both are the same. This I'm going to call, because it is cutting my transverse side. So ये मैं transverse नाम दे रहा हूं. तो this is the length. This is the breadth. IT, moment of inertia, second moment of water plane area. If I rotate this water plane area twice about this axis, second moment, I will get moment of inertia.
The side which is parallel to the axis is powered as 1, which is that side length. The length is powered as 1. The side which is perpendicular to the axis is powered as cube divided by 12. That's the reason why this LB cube by 12 was written here. So this is moment of inertia I transverse because it is cutting the transverse side. IT. This is moment of inertia transverse. जहां पे एक एक्सिस और होती है, ये वाली एक्सिस. That means ये वाली एक्सिस. अगर इसी एक्सिस को मैं साइड से दिखाऊं, वो कुछ ऐसी नजर आएगी. इस एक्सिस के अबाउट जहाज पिच करता है या ट्रिम करता है. सो इसको कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस. ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है. ये मुझे IL देगा. The side which is parallel to the axis is powered as 1. The side which is perpendicular to the axis is powered as cube. And therefore, you get BL cube by 12. So IT, IL, दो एक्सिस हैं. ये वाली एक्सिस ये ट्रांसवर्स साइड को कटर कर रही है. इसके अबाउट जहाज रोल करता है, तो ये रोलिंग एक्सिस भी कहलाती है. इसके अबाउट जहाज पिच करता है, ट्रिम चेंज करता है, तो ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस कहलाएगी. सो लॉन्जिट्यूडनल, it is cutting the longitudinal side. So IL. This is cutting the transverse side. So IT. So IT will give me B square by 2LD. Similarly, BML will give me IL by V. Is equal to BL cube by 12 LBD is equal to L square by 12D. Shortcut. So BMT, BML. सर थोड़ा कैमरा नीचे करेंगे सर. कैमरा नीचे करूंगा. दिख रहा है वैसे. Okay sir, thank you. This is the best. It's okay. IT के आगे क्या फॉर्मूला है? Yes, sir. Yes. Yes. IT के आगे क्या फॉर्मूला? IT is LB cube by 12. IL is BL cube by 12. So once I put IT in this formula, LB cube by 12, LBD will give me B square by 12D for a box-shaped vessel. Similarly, BML will give me L square by 12D for a box-shaped vessel. So when we say
the GM of a vessel is 0.3 meters. GM of a vessel is 0.3 meters. T is silent. So it is actually GMT. Yes, sir. T is silent. So it's GMT. Similarly, free surface effect, IDI by W. I, which moment of inertia to use? T is silent. IT, Transverse. transverse, because connected with rolling, Transverse. connected Transverse with stability. transverse stability. So IT. So connected with that. That's the connection between them. So whenever we talk about anything to do with trim, MCTC, we will be talking about L. Because longitudinal stability. Okay. Point number 4. So are you able to see this side? Are you able to see this side? दिख रहा है? पूरा नहीं दिख रहा, पूरा नहीं दिख रहा सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। कुछ सेक्शन। Okay. So फिर मैं इधर से erase कर देता हूं। सर जो MCTC का फार्मूले में GML होता है, वो सर यही GML है सर जो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लॉन्गिट्यूडनल है। Absolutely right. I'm just coming to that only now. So your MCTC formula is W into GML upon 100L. This GML is the यही वाला ML जिसकी हम बात कर रहे थे अभी. And this is approximately equal to W into BML upon 100L. This formula is going to be used if kg is given in the question. This formula is going to use if kg is not given in the question. This is a formula for MCTC. So now, what is the use of this? Kb plus Bm is equal to Km. Similarly, Kg plus Gm is equal to Km. Therefore, what do I get? Kb plus Bm is equal to Kg plus Gm. If I'm talking about transverse, then this is transverse. So Kb plus Bmt is equal to Kg plus Gmt. Supposing I'm talking about longitudinal, then Kb plus Bml is equal to Kg plus Gml. So the same equation can be used for either transverse or longitudinal, depending on the orientation, what you are looking at. किस orientation में जा रहे हो? अगर इस orientation में जा रहे हो, rolling की बातें कर रहे हो, तो T है. अगर इस orientation की बातें करते हो, pitching की बातें कर रहे हो, या trim change की बात कर रहे हो, तो longitudinal है. So depends on the orientation. So this becomes your crucial formula for you. Is that okay? Yes sir. सर जो लिखा है आपने MCTC को W upon BML divided by 100L, सेकंड फार्मूला सर उसी वाला, सर इक्वल टू और अप्रॉक्स लिखा है सर आपने क्या? ये अप्रॉक्स लिखा है.
मतलब दो फॉर्मूला यही है उसमें, एक में केजी है एक में केजी नहीं है। एक में केजी है, सर एक में अगर केजी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और जीएमएल निकालना है। अगर केजी मुझे दिया हुआ है तो मैं जीएमएल निकाल सकता हूं बाय टेकिंग द केजी दिस साइड। केबी का फॉर्मूला मुझे पता है d/2, बीएमएल का फॉर्मूला मुझे पता है L²/12d माइनस द केजी विल गिव मी जीएमएल, और इस जीएमएल को मैं इस फॉर्मूले में यूज करके एमसीडीसी निकाल सकता हूं। यस। और वंस एक बार मेरे पास एमसीडीसी आ गया तो मैं ट्रिम चेंज निकाल सकता हूं। वो मुझे फॉर्मूला पता है ट्रिम चेंज का, टीसी इज इक्वल टू ट्रिमिंग मोमेंट अपॉन एमसीडीसी। मैं टीसी निकाल सकता हूं। एक बार मैंने टीसी निकाल लिया तो मैं टीए भी निकाल सकता हूं एंड देयरफॉर टीएफ भी निकाल सकता हूं। इस सेकंड वाले में सर आपने अप्रॉक्स की मेंशन किया हुआ है सेकंड फार्मूला एमसीटीसी के लिए, इसलिए क्योंकि दिस इज द एक्चुअल फार्मूला एंड अगर केजी क्वेश्चन में मुझे नहीं दिया हुआ है तो मुझे पर फोर्स बीएमएल यूज करना पड़ेगा। एंड जब मैं बीएमएल यूज करूंगा तो जो मेरी वैल्यू आएगी एमसीटीसी की, वो मेरी वैल्यू में इन दोनों में हल्का सा भी फर्क आएगा क्योंकि जीएमएल और बीएमएल में अंतर होगा, तो देयरफॉर मेरी एमसीटीसी की वैल्यूज में भी फर्क आएगा। लेकिन जब मैं इस फॉर्मूले में जाऊंगा तो एमसीटीसी मेरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जब मेरा एमसीटीसी डिनोमिनेटर में जाएगा, इस टीसी के मेरे यूनिट्स क्या हैं? सेंटीमीटर। करेक्ट, ये मेरे सेंटीमीटर है। सो सपोजिंग मेरा ये जो डिफरेंशियल था जिसकी वजह से मेरा टीसी सेंटीमीटर्स में डिफरेंशियल आएगा, लेट अस से 1 सेंटीमीटर, जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा डेसिमल विल मूव टू द लेफ्ट, इट विल बिकम 0.01 or 0.001, that will be hardly minuscule. So eventually मेरे ड्राफ्ट में कोई फर्क नहीं आएगा because I would have gone to the third अगर decimal. केजी तो समझे, अगर केजी दिया रहेगा तो अगर हम सेकंड फार्मूला यूज करते हैं तब गलत हो सकता है ये। That's right, वो प्रिंसिपल एरर है, तभी तो मैंने खास लिखा है इस तभी मैंने खास लिख दिया था, वो प्रिंसिपल एरर हो जाएगा। So that's how you got to do it. Okay, I'm coming to exercise 15. I'm on question number 10. A ship of displacement 10250 tons, KB 5.6 meters, kg 8.3 meters, floats in salt water. If the moment of inertia about the center line, this axis is also called the center line axis, जिसको मैं ट्रांसवर्स का नाम दे रहा था because it was cutting the transverse side, is also called as center line because ये center line के थ्रू जा रही है, तो इसको center line भी कहते हैं। So moment of inertia about center line is
45,000 M4. FSM is 2050 TM. Find the GM fluid. Find the GM fluid. All right. Let's start with KB मुझे दिया हुआ है. Let's start with BM. Let's start with BM. T is IT by V. So let's find out V first. V will be equal to W by density. 10250 divided by 1.025. How much is the V? 10,000. 10. So many cubes. Okay. I is given to me already. So calculate BMT. $45,000 M4 divided by 10,000 cubes. How much? 4.5. 4.5. 4.5. All right. KB plus BMT minus KG will give me GMT. Give me the value of GMT. And this will be GMT solid. 1.8. Find out FSC. Find out FSC. 0.2. 0.2. FSM divided by W. 2050 divided by 10250. So GMT solid minus FSC. Find out the value of GMT fluid. Six. 1.6. 1.6. So that's your answer. सर ये BMT कैसे आया था सर वो 4.5? BMT 4.5 कैसे आया? BMT is IT by V. We wrote the formula. Yes sir. IT is 45,000. Yes sir. Divided by V, we found is 10,000. Sir, this V, what is this V, sir? I missed that one. V is underwater volume. V is underwater volume. Okay, sir. Understood. Underwater volume is displacement divided by density. Ah, sorry. Okay, sir. So 10250 divided by 1.025 will give me 10,000.
Yes, sir. Understood. Thanks. हाँ जी, any doubts? Any doubts? सर वो सेंटर लाइन वाला क्या बताया था आपने? आई सेंटर लाइन, आई सेंटर लाइन और IT आर द सेम, एक ही बात है। ओके। कई बुक्स या पेपर में सेंटर लाइन लिखा जाएगा, कभी वो ट्रांसवर्स लिखा जाएगा। सो मतलब यू गॉट टू बी क्विक इनफ टू कैप्चर ये हम बात किसकी कर रहे हैं। हम रोलिंग की बातें कर रहे हैं बेसिकली, तो हम सेंटर लाइन की बात कर रहे हैं, हम ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं। सर लॉन्गिट्यूडनल में IL ही लिखना पड़ेगा ना? लॉन्जिट्यूडनल में IL आ जाएगा। That cannot be center line. दैट कैन नॉट बी सेंटर लाइन, दैट कैन नॉट बी सेंटर लाइन। वो गलत हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एरर हो जाएगा। Yes sir. ठीक है, इज दिस ओके? ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस वाला था, ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडनल, ये फेज 2 तक चलेगा। सो प्लीज डू रिमेंबर इट इवन व्हेन यू कम बैक फॉर फेज 2, बिकॉज ये इशू रहने वाला है। इट्स अ परमानेंट इशू। ओके सर। ठीक है, ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक। Okay, chalo, let's take a break. Let's meet after 15 minutes. थैंक यू सर। Thank you. Okay, sir. Thank you. यस।